So we'll begin with the questions, the doubt questions on real numbers. So can you please repeat the question? Find the least number. Yes. Sir, the question says uh, the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 is. Okay. Least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10. As in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I want a number which is divisible by all these numbers. Can anyone here tell me what or how will we find it? Don't tell me the answer. How will we find it? What should be our Take approach? LCM. Exactly, yes. We'll take LCM of all these numbers. So the least such number which is divisible by all these numbers, that means it's a multiple of all these numbers, will be the LCM. So you just find out the LCM of these numbers and that gives you your answer. Do you Okay, sir. understand? I mean, Yes, sir. could you do it now? Yes, sir. Okay. Sir, more doubts also, sir, I have. Please go on. Yes, sir. The smallest number by which root Hmm. 27 should be uh, multiplied so as to get Hmm. rational number. Okay. Now, this thing which the number by which we multiply to rationalize is also called as rationalizing factor. For different irrational numbers, the rationalizing factor will be different. And we'll take a couple of examples and understand how exactly we can do it. Okay. So let's take an example. Okay, let's begin with this question only. Root of 27. So our first step is to write this irrational number in simple form, simplified form. So from this root of 27, I can write Sir, 27 3 root as 3. 3 into 3 into 3, and therefore this root of 3 root 27 will 3. become 3 root 3. Yes. Now to rationalize 3 root 3, I just have this root 3 which is making it irrational. So if I multiply by root 3, my number becomes 3 into 3, which is 9, which I'm not interested in. But what I'm interested is this number by which I multiplied. So this number is also called as rationalizing factor. So root 3 will be the answer. Root 3 is the smallest number by which if we multiply, we get a rational number. What else? Yes, sir. Sir, the next question says that the remainder सर सिमिलरली when 64 को करना चाहें Sorry? सर अगर हम लोग से रूट 64 को करें तो कैसे होगा Root 64 is already a rational number. Root 64 is 8. So you directly write root 64 is 8. It's already a rational number. So there's no यस point of यस rationalizing it. sir, sir, Yes. the next question says that the remainder when Hmm. the Hmm. square of any prime number Hmm. greater than 3 is divided by 6 is. Okay. So any prime number, please repeat the question. Yes, sir. So the question says that the remainder when the Hmm. square of any prime number greater than 3 Hmm. is divided by Hmm. 6. Okay. When any prime number greater than 3, for any prime 1. number greater than 3, when p square is divided by 6, we want to find out the remainder. That's the question, right? Yes. Yeah. Okay. So now it's pretty strange. Let's see what can be done. For greater than 3, if I just to make a trend or to understand the trend in this question, let's take up a few numbers. Let's say if p I take up as 5, the remainder when p square is divisible by divided by 6, 25 is divided by 6, the remainder is 1. 1 So why would we take 25? It's a composite number. 69. So 169 will again be 169.
Sir, your voice is breaking a lot. We are not able to hear you. For this, we will have to go by this method. Okay. Otherwise, there are some theorems on number theory which we do not have in our syllabus. So Sir, if your voice such a is question breaking. comes in, so if such a question comes in exam, it will surely be for as an MCQ or Sir, for 1 mark. So sorry, sir, sir, could you please repeat, sir? Your voice was breaking a lot, and your my voice is code is breaking a not lot. clear. Okay, Yes, okay, sir. okay. Let me check. Just give me a minute. Any better now? Is it any better now? Yes, sir. Yes, Yes, sir, sir. it's better. Okay. Sir, could you please restart the screen share? Yeah, I just did. Can you all see the screen? Yes, sir. Okay. So that was the first question. Could you all see the first question, or that no, that time also the screen wasn't visible? Sir, the since Okay. So the first question you all have understood. So for the second question, I just repeated once again. The question says that for a prime number which is greater than 3, when I divide its square by 6, what is the remainder? Now there are certain theorems in number theory which are not there in our syllabus, which are used for such questions. If such question is asked in your exam, be it any board, it will only be asked as an MCQ or a 1 marker. So for such questions, what you can do is you can take some prime numbers. I've taken 4 prime numbers as examples. And for all these 4 prime numbers, I squared them and divided by 6. And when I check, the remainder for every number is 1. 25, 49, 121, 169. Any number I divide by 6, it's always 1. So therefore, the remainder is always 1. So 1 is the answer for your question. okay. In the Okay. Any other doubt? yes, sir. Yeah, Hello. please tell me. Sir, in the type of question which says that the decimal expansion of the Hmm? rational numbers 14587 upon 1250 will terminate after. Sir, is there Okay. a singular Yes. approach for these? Yes, there is a singular approach to it. Please tell me the denominator. Yes, sir. Sir, the denominator is 1250 and the numerator is One. 14580. Yeah, numerator doesn't matter. Numerator doesn't matter. So Everything 1250. depends on the denominator. Understand this. Now, everything depends on the denominator. Now, when I say this, what I mean is this 1250. First of all, if you remember, for decimal expansion, we only okay. For decimal expansion, we only look for the denominator, and we prime factorize the denominator, and we observe whether it is in the form of 2 raised to m into 5 raised to n. अगर वहां पे 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी एक प्राइम फैक्टर है, then it is a recurring decimal. Otherwise, it's always a terminating decimal. क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि it's a terminating decimal. They just want कि after how many places will it terminate. Now, let's go step by step. The first step being prime factorizing 1250. Now, it's a task for all of you. Please prime factorize 1250 and tell me the answer. It will definitely be in the form of 2 and 5. 2 raised to something into 5 raised to something. Please do it. So 2 into 5 raised to 4. 2 into 5 raised to 4. Okay. So there's a single 2 and 4 5s, right? Try the denominator with 8
and then we'll get 2 raised to 4 and 5 raised to 4, then we'll get 10 whole raised to 4. Sorry. Yeah, Acha, okay. You're telling me the Yes, answer. yes, Okay. so we'll do So that what way. yeah, got it. So what I'm saying is, when I prime factorize this, I get 2 into 5 raised to 4. So 2 raised to 1 and 5 raised to 4. Now, if you think, just think, don't do anything, just think, dividing by one type of number is very easy because we just have to move the decimal place. That is, when the denominator is in power of 10, it's either 10 or 100 or 1000 or 10,000 or 5 crore or 10 crore or whatever, something like that. So if it's only with respect to 1 and zeros in the powers of 10, then it becomes very easy to find out after how many places will it terminate or how many decimal places will be there. So if I want to make it to the power of 10, I should have equal number of 2's and equal number of 5's. So therefore, I must multiply this by 2 cube. Only then it will become 2 raised to 4 and 5 raised to 4. Do you all understand this? Yes, sir. So if I multiply the numerator by 2 cube, which is 8, and the denominator also by 2 cube, which is 8. I don't know what exactly it is. I'm not interested. What I will get is, I will get my new denominator will be in the form of 2 raised to 4 into 5 raised to 4, which is nothing but 10 raised to 4. So how many ever places I have in the numerator, I don't care. But if there are 4 zeros in the denominator, 10 raised to 4 is nothing but 1 with 4 zeros. So if there are 4 zeros in the denominator, the decimal will be after 4 places. Right? You understand? Over here, whatever is our numerator, the denominator will be 1 with 4 zeros. And so whatever answer we get, we will always get 4 decimal places because of these 4 zeros. So after how many places it will terminate? It will terminate after 4 places. So what we do is, we make the number of 2 and 4, 5 equal, and that's how we get the answer. इसे आप ऐसे भी देख सकते हो that in all such questions, अगर आपको ज़्यादा steps नहीं चाहिए, आपके लिए वो 3 या 4 या 5 मार्क के लिए नहीं है, if it's only for 1 or 2 marks. So what you can also do is, you can prime factorize it, and after prime factorizing, you can just observe the powers of 2 and 5. So you can write it if you want. For finding after how many places it terminate, what we do is, we prime factorize q, which comes out as 2 raised to m into 5 raised to n. And out of this 2 raised to m and 5 raised to n, the greater number out of m and n are the number of places after it terminates. So it will terminate after. The language should be reshuffled. But I hope you understood the logic. Yes, sir. It will terminate after how many places? Whatever is the greater number from between m and n. Sir? Yes. Sir, just a last question about real numbers. Okay. Yes, sir. The question says that the sum of the exponents of the prime factorization of sum of the exponents of the prime factors in the prime factorization of 196 is. Okay, so 196 ke prime factors. Okay, so some of the factors, that's what they're asking, no? Yes, sir. No, Right? no, sir. They are telling some of the exponents. Some of the powers, huh? Okay. So 196 is 14 So it is square. 4. Yeah, so 196 is 14 square. 14 square means 2 raised to 2 into 7 raised to 2. So sum of the exponents is 2 plus 2, which is 4. Yeah. Okay.
Yes, sir. Now we can hear you. Okay. Any other question for real numbers? No. Okay. So we take up polynomials now. So please look over here. Let's understand what all things we have in polynomials. Okay. आप लोग सब ये पहले पढ़ चुके हो. I'm just revising. Can anyone here tell me what is a polynomial? अपने own words में. I don't want the definition. I'm not the person who's very much interested in definitions, textbook definitions. In your own words, what is a polynomial? कुछ भी अपने वर्ड्स में जो भी आपको पॉलिनोमियल के बारे में पता है आप कोई बताना चाहे तो. None? Okay, I'll say something. Polynomial is a combination of alphabets and numbers and signs. अब मैं अगर इसमें टेक्निकल मैथमेटिकल टर्म्स में बोलना चाहूँ तो आई कैन से कि polynomial is a combination of variables and constants and mathematical operators, you know. Now my question is, if anyone here knows, can anyone here tell me what is the difference between an expression, algebraic expression, and a polynomial? That is standard 9 maths, if I remember. Sir, an algebraic expression is expression consisting of two or more than two variables. Okay. What is a polynomial then? So polynomial is a group of is an equation which consists only one variable. Nope. 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 Firstly, it's not an equation. Secondly, it's not necessary it will have only one variable. Anyone else? Okay. I'll tell you. So Sir, algebraic. Go on. expression has an equal to sign. No. If it has an equal to sign, it will be called as an equation, not an expression. Okay. So here nothing has equal to sign. We have no equal to sign Sir, over here. Yes. sir, the Yes, Param, I got your polynomials. message. It's an expression with variable with more than two terms. Now that's also not exactly true. Okay, I'll tell you. Please listen to me very carefully and try to understand what I'm saying. Okay. Firstly, जो हम definition की बात कर रहे थे, जो हम random layman words में हम बात कर रहे थे, that is an algebraic expression. An algebraic expression is a collection of variables, which are alphabets, constants, which are numbers, and mathematical operators, plus, minus, multiplication, division. When I write this separating with a plus or minus, individual groups are called as terms. Now that's an algebraic expression. Now special types of algebraic expressions classify as polynomials. Now what are they? Please look over here. When an expression, let's say, is polynomial in terms of x. Now again I repeat, a polynomial or an algebraic expression can have any number of variables. It can have 1 variable, 2 variable, 3 variable, 100 variables. In our syllabus right now we have polynomials only dealing with 1 variables. Okay, so any polynomial can be written as, please look over here, I can say it is let's say a0 x raised to 0 plus a1 x raised to 1 plus a2 x raised to 2 and so on till an x raised to n, where a0, a1, a2, a3 are all constants and x is the variable and it has some power. अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने algebraic expression के लिए भी बताया था, तो how does it become a polynomial? हम कैसे मालूम पड़ेगा कि एक algebraic expression polynomial के लिए classify कर रही है या नहीं? So for an algebraic expression to become a polynomial, it has to satisfy two conditions. First Sir, condition its, is power that this should not be a0, rational. a1, can you all please be on mute? Yeah. All this a0, a1, a2 and so on till an, firstly they should be real numbers. So आपने तो अभी तक सिर्फ रियल नंबर्स ही पढ़े हैं, ऐसे नंबर्स आपने पढ़े ही नहीं है जो रियल नहीं होते हैं, तो वी आर नॉट गेटिंग इट.
So आपके पास नॉर्मल कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए, रैशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, पाई होगा, √2 होगा, सब चलेगा. द मेजर कंडीशन इज जो n है, द पावर ऑफ x, that should be a whole number. This symbol this symbol is read as belongs to. So n belongs to whole numbers. So n has to be a whole number. I hope everyone here knows what's a whole number. 0 1 2 3 4. तो इसका मतलब Yes, sir. दो चीजें हम यहाँ पे बहुत साफ साफ रूल आउट हो रही है. पहली कि पावर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती. सेकेंड, पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती. व्हाट डज दैट मीन? दिस n मतलब ऐसा कुछ 1/x टाइप की चीजें नहीं आ सकती, या रूट के अंदर x टाइप की चीजें नहीं आ सकती. समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सो दैट इज व्हाट मेक्स एन पॉलिनोमियल. अब पॉलिनोमियल में ये जो चीजें हैं यहां पर लिखी हुई, these are called as terms. So it can have any number of terms as it likes. It can have 1 term, 2 term, 5 term, 500 terms. उसके ऊपर है. पावर क्या हो सकती है? पावर 0 भी हो सकती है, पावर 1000 भी हो सकती है, उसके ऊपर है. So there is no condition on that. Now मतलब होल नंबर होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay, so now let's just come to a few things. Write down classification of polynomials. Please write down classification of polynomials. So first type of classification is based on number of terms. कि एक polynomial में कितने terms हैं उस पे डिपेंड करता है कि उसको क्या नाम देंगे. So if there is only one term, it is called as monomial. If there are two terms, it is called as binomial. If there are three terms, it is called as trinomial. After four terms, there are no standard names. So after four, we just say it's a polynomial with 5 terms, with 6 terms, with 10 terms, जो भी है. So कोई special नाम नहीं है. Okay. Then the second classification is based on the degree. Now for that, we should know what is degree. So please write down degree. What is degree of a polynomial? Sir, Anyone here the wants to highest answer? power is known as a degree. Couldn't hear. Sir, it is Sir, the the highest highest power. power is known as the Yes, degree. yes. So please write down the highest power of the variable. So highest power of the variable is called as degree. Is this much clear? Is this much clear to all? I hope so. Yes, sir. So based on the highest power, we again classify. So if the degree is 0, मतलब वहां पे सिर्फ x की पावर मैक्सिमम 0 ही है, right? So such अगर x की पावर 0 है, so x raised to 0 is 1, which is a constant number. So when the degree is 0, we call it a constant polynomial. When the degree is 1, anyone here can tell me what do we call it? Linear. Linear polynomial. When the degree is 2, we call it as a quadratic. Quadratic. When the degree is 3, we call it cubic. This much we Cubic. have in our syllabus. When the degree is 4, we call it biquadratic. ये आपके Biquadratic. जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं. Can also be called as quartic. And after 4, we do not have any special name, so we just call it polynomial of degree 5, polynomial of degree 6, and so on. ये बाइक्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक भी आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया है. 3 तक के नाम्स आपको पता होने चाहिए. दिस इज व्हाट यू हैव इन योर सिलेबस. So general form of a constant polynomial is any constant number, let's say a. उसके आगे कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है मतलब x raised to 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता. Linear polynomial is written as ax plus b, where the highest power is x. Quadratic में general form is ax square plus bx plus c. Here a should not be 0. Okay, otherwise फिर वो quadratic ही नहीं बचेगा. Cubic का general form is ax cube plus bx square plus cx plus d. Similarly, you go for 4th degree. We don't have it in our syllabus. We're not wasting time there. So these are their general forms.
Okay, generally it's written like this. Everyone has understood till here? Yes, sir. Those who writing, have you all written or taken screenshot? Yes, sir. Okay, so I'll proceed then. Yes, Param, you are right. Param just messaged me the general form of biquadratic. He is right. Okay, that's not in a syllabus, so we're not going there. यहाँ तक का क्लियर हो गया. प्लीज याद रखना ये चीजें जनरल टर्म्स जो हमने लिखे हैं जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म वो हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में. So please remember that. Okay. Now I move ahead. This was the first part of the chapter. What is degree and what are the names based on degree, etc. Then we come to the topic called as value of a polynomial. So value of a polynomial का मतलब P of A. मतलब value of polynomial when A. So वो कैसे मिलता है हमें? It is nothing but the value of, you can say it's the value of P of X when X is equal to A. मतलब उन्होंने कोई भी एक एक्सप्रेशन दे दिया, P of X का एक पोलिनोमियल दे दिया और बोल दिया कि भाई X इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड करो. मतलब क्या करना है आपको? X की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करना है और जो भी आंसर आएगा वो आपकी वैल्यू हो जाएगी. Am I clear? I'm not sure. I hope so. Yes, Let's say sir. उन्होंने एक P of X दे दिया है. Let's say उन्होंने एक P of X दिया है x square minus 3x plus 2. मान लेते हैं ऐसे रैंडम फॉर एग्जांपल. ठीक है. And now they say कि भाई find out the value of P of X when X is equal to 1. तो इसका मतलब क्या होगा? P of 1 फाइंड करना है. कैसे करेंगे? X की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिलेगा? 1 square minus 3 into 1 plus 2. So 1 square is 1, 3 into 1 is 3, plus 2 is 2, 1 plus 2 ये 0 हो गया. So value of the polynomial is 0. Coincidentally 0 है, जरूरी नहीं है 0 होगा, अलग अलग x पे अलग अलग वैल्यू आएगी. Am I clear? Yes, sir. Okay. So that is value of a polynomial. Next topic is zero of a polynomial. Now what do you mean by zero of a polynomial? इसमें zero of a polynomial का मतलब polynomial zero नहीं हुआ है. एक polynomial का zero find करना है. What does it mean? It means we want to find out the value of x where p of x becomes 0. So p of x जहां पे 0 होता है वो वाली वैल्यू चाहिए मुझे. Are you understanding? So it's like, for example, 0 of a polynomial is a if p of a becomes 0. तो जहां पर ये polynomial 0 हो जाएगा, that value is called as 0 of the polynomial. जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमारे 1 सब्स्टिट्यूट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई थी. So therefore I can very well say that 1 is a 0 of p of x or 0 of this polynomial. Did you all understand what are zeros and what is value? Next, please write down a statement. ये statement शायद आपको पता नहीं कहीं कोई बुक में मिलेगा या नहीं, तो please write down a statement. Maximum number of zeros of a polynomial, maximum number of zeros of a polynomial is the degree of the polynomial. Maximum number of zeros of a polynomial is the degree of the polynomial. Maximum number of zeros is the degree of the polynomial. Am I clear? Now, when I say it's the degree of the polynomial, इसका मतलब अगर एक linear expression है तो it can have maximum 1 zero. अगर कोई quadratic है तो it can have 2 zeros. अगर कोई cubic है तो it can have 3 zeros. Am I clear? Now, अब मैंने ऐसे क्यों बोला कि maximum उतने हो सकते हैं? When I say कि भाई quadratic के maximum 2 हो सकते हैं, इसका मतलब मैं hidden lines में मैं imply कर रहा हूं कि भाई जरूरी नहीं है हमेशा 2 होंगे. हो सकता है 1 हो या हो सकता है 0 हो. Now what does that mean? So for that
let's understand what does geometry of a polynomial mean. So geometry of a polynomial का मतलब ये है कि अभी कोई भी अगर polynomial है उसको मैं ग्राफ पे बनाऊंगा तो कोई तो कर्व बनेगा, मतलब अगर लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्वाड्रेटिक है तो कुछ इस शेप का बनेगा, है ना. दैट शेप इज कॉल्ड एज पैराबोला, अगेन आउट ऑफ आवर सिलेबस, सो वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट. क्यूबिक है तो अगेन इस तरह की कर्व होगी, 4 डिग्री है तो और एक कर्व होगी, मतलब वी विल गेट समथिंग ऑन द ग्राफ, है ना. नाउ Sir, parabola is there. Sir, parabola is there in our syllabus. which syllabus, which board are you in? Sir, CBSE. No, parabola we don't have in our No, syllabus. sir, not in CBSE. Sir, like it's like for Actually, real roots yeah, Percent parabola, percent yes, and yes, real, yes, yes. it will So, intersect that one. yeah, I'm telling that. So parabola, as in we have this much कि भाई the shape is called as parabola. That is what we have in our syllabus. We don't have details about a parabola in our syllabus. भाई वो कहाँ पे end हो रहा है, कहाँ पे start हो रहा है, कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, वो नहीं है हमें. हमें इतना जरूर है, वो मैं बता देता हूँ. जो आप बोल रहे हो वो उतना सा पॉइंट है, वो मैं क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी. So what I was telling here is that any polynomial on the graph is given by a curve. Okay. अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई p of x is equal to something, so अगर मेरे x एक्सिस पे तो ऑब्वियस सी बात है x होगा. So अगर x एक्सिस पे x है, इसका मतलब y एक्सिस पे होगा p of x, मतलब जो भी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है. So मुझे वो वैल्यू चाहिए 0, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, है ना. So एक ग्राफ में कहां पे y वैल्यू हमेशा 0 होती है, एनीवन? On the x-axis. ऑन दी x एक्सिस. इसका मतलब वो कर्व जहां पर भी x एक्सिस को कट या टच करेगा, दैट पॉइंट कैन बी कॉल्ड एज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. मान लो ये ऐसा होता, सो ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये 4 पॉइंट्स जो है जहां पे वो टच हो रहा है या इंटरसेक्ट हो रहा है. इस पॉइंट पे y 0 है, y 0 है, मतलब जो भी x की वैल्यू होगी दैट विल बी कॉल्ड एज 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल. सो प्लीज राइट डाउन. ये जो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है, यहाँ पे आप एक और चीज लिख सकते हो. इट इज द वैल्यू ऑफ x वेयर द ग्राफ टचेस और इंटरसेक्ट्स, कुछ भी होगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. It either touches and goes again to the same direction, या फिर intersect होकर दूसरे साइड जा रहा है. It touches or intersects x axis. This is very important. शायद आपको ये फाइंड करने नहीं आएगा कि भाई ग्राफ से बताओ कौन से हैं रूट्स या कौन से हैं जीरोस, बट ये जरूर पूछा जा सकता है कि कितने जीरोस है. तो ग्राफ, जब भी आपके सामने ग्राफ होगा, उसमें बस आपको काउंट करना है कितनी बार x को टच हो रहा है या इंटरसेक्ट हो रहा है, and that will be the number of zeros. So that is how we can find out. So this was the geometry, and now again we come back to the zeros. इसलिए मैंने कहा कि अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर उसके जीरो ही नहीं है. When I said कि भाई एक क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 zeros हो सकते हैं, so ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है जब एक ही जीरो है. हाँ बिल्कुल हो सकता है. If a graph is like this, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है ना, तो सिर्फ एक ही जीरो है. मान लो if the graph is like this, Sir, पर टच ही हम नहीं हो रहा. quadratic equations में ऐसे लिखते, सॉरी सर हम quadratic equations में ऐसे लिखते हैं कि the means this quadratic equation has no real roots. तो मतलब unreal roots क्या हम ग्राफ पे शो नहीं कर सकते? नहीं, अनरियल रूट्स एग्जैक्टली ग्राफ में यहाँ पे हम शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पैराबोला बनेगा या वो जो कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा जैसे मैं लास्ट डायग्राम में बनाया. सो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, टच ही नहीं कर रहा तो रूट्स ही नहीं है ना. और जो आप अनरियल रूट्स की बात कर रहे हो, अनरियल रूट्स के लिए एक अलग ग्राफ होता है विच इज कॉल्ड एज मतलब इमेजिनरी कोऑर्डिनेट्स के लिए. सो दैट इज अ डिफरेंट सेगमेंट ऑल टुगेदर, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट. सो हैव यू ऑल अंडरस्टूड कि नंबर ऑफ रूट्स क्या होते हैं और कैसे आपके कितने रूट्स आ सकते हैं? तो अनरियल रूट्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? अनरियल रूट्स मतलब ऐसे नंबर्स जो रियल नहीं है. तो ऐसे नंबर्स जो रियल नहीं है, ओके ठीक है, जिसको नहीं समझ में आएगा प्लीज डोंट फोकस मोर देयर. अनरियल नंबर्स आर स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स.
अब हम सब पढ़ चुके हैं कि भाई स्क्वायर रूट के अंदर तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वो इसीलिए हम पढ़ते हैं जिससे हमारा नंबर हमेशा रियल नंबर रहे, बी इट रैशनल और इरैशनल। बट व्हाट इफ रूट के अंदर नेगेटिव नंबर चला जाए, तो ऐसी तो वैल्यू हमने आज तक पढ़ी नहीं। So such numbers are called as unreal numbers or imaginary numbers. You'll learn it next year. Okay, sir. Okay. Now सर पर हम उसे मतलब ग्राफ पे एक हम रूट 1 को सपोज ग्राफ पे प्लॉट किया है हमने 9th स्टैंडर्ड में, अभी उसको ही नेगेटिव साइड पे ले ले मतलब वो राउंडर के पॉइंट को 0 पे रखे, तो हमने माइनस नहीं रूट 1 को नहीं ले पाएंगे। तो उससे क्या होगा, जैसे जो आप बोल रहे हो मैं वो क्लैरिफाई कर देता हूँ। जैसे 9th में आपने रूट ऑफ 5 प्लॉट किया है, तो आपको याद होगा रूट ऑफ 5 हम ऐसे थोड़ा सा 2 लेके 1 लेके हम ऐसे करके प्लॉट कर देते हैं, रूट ऑफ 5 आ जाता है ना। आप कह रहे हो कि अगर हम नेगेटिव साइड में बना दे तो नेगेटिव साइड में आ जाएगा, और जो नेगेटिव साइड में आएगा दैट विल बी माइनस ऑफ रूट 5, जो पॉजिटिव साइड में आया है वो है रूट 5। मैं बात कर रहा हूं फॉर नंबर्स लाइक रूट ऑफ -5, ये माइनस रूट के बाहर नहीं आ सकता। So such numbers are called as imaginary numbers. We don't have it in our syllabus, so let's not get into that. Coming back to what we have in the syllabus, so majorly we deal with quadratic polynomials. I'll come to that. I'll come to quadratic polynomials. तो जैसा हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे पैराबोला के बारे में एक इंफॉर्मेशन है, तो हाँ बिल्कुल है। फॉर अ क्वाड्रेटिक, या क्वाड्रेटिक से पहले एक काम करते हैं, लेट्स टेक अप अ लीनियर पॉलिनोमियल। इन अ लीनियर पॉलिनोमियल जैसा हमने डिस्कस किया, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म इज ax प्लस b। अब जब हम बोलते हैं कि हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जब ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, तो अगर हम इसे 0 रख देंगे तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज माइनस b बाई a। b राइट में आएगा, फिर a नीचे आएगा, राइट। सो दिस विल बी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। This is also called as root of the polynomial, also called as solution of the polynomial. Okay, usually denoted by alpha, क्योंकि एक ही है तो हम इसे अल्फा से डिनोट करेंगे। That is for a linear polynomial. इतने सिंपल क्वेश्चंस 9th में आते थे, 10th में नहीं आएंगे। हमें आएगा क्वाड्रेटिक के बारे में। सो क्वाड्रेटिक के बारे में, क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म इज ax square plus bx plus c. Now when I take it equal to 0, x की दो वैल्यूज आ सकती हैं, हो सकता है एक भी नहीं आए, हो सकता है एक आए, हो सकता है 2 आए, ठीक है। सो वो कैसे मिलती हैं, दैट वी विल लर्न इन चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज अ चैप्टर। वहां पे हम पढ़ेंगे किस तरीके से हम इसकी वैल्यूज, x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। देयर आर 3 मेथड्स व्हिच वी विल लर्न, जिसमें से एक मेथड ओमिट हो गया, फिर भी मैं हल्का आइडिया आप लोग को दे दूंगा। बट जो भी x की वैल्यूज आएंगी, अभी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। एक मेथड जो आप सबने पढ़ा है तो मैं वो बता देता हूं। वन ऑफ द मेथड इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, x के दो ब्रैकेट्स मिल जाते हैं और वहां से हम x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। सो दैट इज वन मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द रूट्स। ओके, तो जो भी दो रूट्स आते हैं, लेट्स टेक द रूट्स एज अल्फा एंड बीटा। सो दीज आर द टू रूट्स। हमें इस चैप्टर में क्या है इसके बारे में, वी हैव टू थिंग्स। वन इज सम ऑफ द रूट्स, so sum of the zeros or sum of the roots, whatever. So sum of the zeros, that is alpha plus beta, will always be equal to minus b by a. जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा, फिलहाल हम इसे प्रूव नहीं कर रहे हैं। And product of the zeros alpha into beta is always given by c by a. You need to remember this. This is very, very, very crucial. This formula is very, very crucial. Alpha plus beta is always minus b by a, and alpha into beta is always c by a. अब while we are on this topic, before moving ahead, कई क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे आएंगे जहां पे आपको अल्फा माइनस बीटा आपको यूज फाइंड करना होगा या यूज करना होगा। सो क्या कोई मुझे ऐसा बता सकता है, क्या कोई फॉर्मूला ऐसा है जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा को आपस में रिलेट करता है? बीटा इनटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। Yes, or I can say that alpha minus beta का स्क्वायर is alpha plus beta का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आप चेक कर लो ना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को ओपन करो, आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। वो -4 होने की वजह से -2 अल्फा बीटा हो जाएगा, एंड आई विल गेट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यू कैन रिमेंबर। तो जब भी आप इसकी वैल्यूज निकाल लो,
ये फॉर्मूले से हम अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको समझा भी देता हूं। ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए का स्क्वायर विच इज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स सी बाई ए। यहाँ पे हम a से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेने के लिए, तो यू विल गेट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। दैट विल बी अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? इट विल बी रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय a. This root of b square minus 4ac is also called as discriminant denoted by capital D. फिलहाल आप इतना लिख लो, जब आप क्वाड्रेटिक पढ़ोगे तो क्लब करके आपको बहुत इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी। फिलहाल आपको एग्जाम में ऐसे ही याद रख लो, या फिर वैल्यूज ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेंगी, उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करके न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हो। बट दिस इज क्रूशियल। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस मच? Yes. So next what we have is a cubic polynomial. Now cubic polynomial का general form is given as ax cube plus bx square plus Plus cx CX plus plus d. And when I equate it to 0, because it's a cubic, maximum it can have 3 roots, so I denote the 3 roots by alpha, beta and gamma. This symbol is called as gamma. फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग, या तो ऑलरेडी पढ़ चुके होगे या आगे चल के पढ़ोगे। So alpha, beta and gamma. Now how are these related with the coefficients? There is also a relation between the roots and the coefficients. So again, by the same logic, sum of the roots, which is alpha plus beta plus gamma, is given by minus b by a. अब क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके हैं, हम दो टर्म्स को एक साथ ले सकते हैं या फिर तीनों को एक साथ ले सकते हैं। जब हम दो को एक साथ लेते हैं, when I take the product as, what I am doing over here is sum of the product of two numbers at a time or two zeros at a time. मतलब alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. This value is given by c by a, and product of all three together is given by minus d by a. तो आप इसे याद ऐसे रख सकते हो कि a is always in denominator, b, c and d are always in numerator, and the sign goes alternate. पहले माइनस था, फिर प्लस हुआ, फिर से माइनस हो गया। So whatever is there on the screen is extremely crucial. I hope everyone here has already written. If not, please take a screenshot. Done? Okay. Now, this much is done. If my memory serves me well, I suppose. Give me a minute. Let me check. I'm just checking out the revised syllabus. I think something got deleted. Give me a minute. From this chapter, polynomials in CBSE, division algorithm for polynomials is deleted. Division algorithm for polynomials is deleted. So what that means is,
division of a polynomial by a division by another polynomial is not there in the syllabus for CBSE. Sir, but the long division is there. We are getting questions like that. So you shouldn't get questions. Please ask your teacher, school teacher to confirm. Okay, sir. Because by the revised syllabus, division algorithm for polynomials is the topic deleted, and 2.4 reads out as division algorithm for polynomials. So that part is deleted. Although I'll just tell you all what exactly it is. गलती से अगर एग्जाम में आ गया तो ऐसा ना हो जाए कि आप ब्लैंक हो. And ICSE में again I'm not sure whether it's deleted or not. So I'll just take that up. Okay. मैं brief में समझा देता हूँ. Division of polynomials I am sure आप लोगों को आता होगा. मैं उसके बारे में कुछ brief information दे देता हूँ जो necessary है. उतना अगर हमें पता है तो फिर हम आगे की चीजें कर पाएंगे. So basically, how do you divide a polynomial by a polynomial? So let's take some random examples and let's understand. Okay, let's take a random question and try to understand. So I'll take up one question and we'll try to solve it, and through that I'll explain कि हम division करते कैसे हैं. ठीक है? Can you all see this question? अब इसमें वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम पे बाद में जाएंगे हम. वो क्या होता है वो मैं बाद में बता दूंगा. पहले हम देखते हैं डिवीजन करते कैसे हैं. तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में पावर ऑलवेज गो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. मतलब सबसे पहले हाईएस्ट पावर होगी एंड देन पावर विल रिड्यूस. तो सबसे पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. तो वी विल राइट दिस एज माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5. And this is getting divided by minus x square plus x minus 1. Is this point clear? कि हम कैसे लिखा हमने. अब सबसे हमारा पहला फोकस होता है on the first terms. So minus x square has to become equal to minus x cube, for which it should be multiplied with x. x से मल्टीप्लाई करते हैं, ये minus x cube हो जाता है. मल्टीप्लाई हम सबको करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x square, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -x. देन वी डू अ सब्ट्रैक्शन, उससे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस. ये पहला टर्म हमेशा कैंसिल होगा. दैट वाज आवर इंटेंशन बिहाइंड मेकिंग इट इक्वल. 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विल गिव मी 2x स्क्वायर, minus 3x plus x will make it minus 2x, and plus 5 will come down as it is. Now minus 2x square has to become equal to minus x square has to become equal to plus 2x square, so we multiply by -2. सो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2x स्क्वायर हो गया. मेरा काम हो गया. पर मल्टीप्लाई तो हमें सबको करना है. सो x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -2x, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा +2. व्हेन आई सबट्रैक्ट, साइंस चेंज. फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया, दैट वाज आवर इंटेंशन. कोइंसिडेंटली सेकंड टर्म भी कैंसिल हो गया. ये इंटेंशन नहीं था और हर बार होगा भी नहीं, पर हो गया. एंड 5 - 2 हो गया 3. सो दिस इज हाउ वी डिवाइड a polynomial by a polynomial. Now what is division algorithm? Division algorithm is something which you must have learned in 4th or 5th standard, which says that dividend is always equal to divisor into quotient plus remainder. plus remainder. And इसमें this is called as dividend. This part over here is called as divisor. This part over here is called as quotient. And this number over here is called as remainder. Am I clear? So I can also say that A is equal to BQ plus R, where A is the dividend, B is the divisor, Q is the quotient, R is the remainder. इसमें बस एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि ये जो वैल्यू ऑफ R है, that always lies between 0 and B. It's always can be equal to 0 or greater than 0, but less than B. Again, ये हमारे syllabus में CBSE में at least नहीं है. ICSE का I'm not sure. So this is not in the syllabus. So questions will not be asked from this. So this is what we have, and I assume this is what the entire chapter is all about.
Okay. So, what I will suggest you all is, जो भी book आपके पास है, first thing is to go through all the solved examples, and then the next thing is to go through all the questions. I will also be sending some questions. Majorly, आप जो भी book अगर reference book refer करते हो, तो आपको questions मिलेंगे based on finding alpha beta, alpha plus beta, alpha minus beta, alpha square plus beta square. And so उन questions पे ज़्यादा focus करो. I'll be also sending some questions which you all have to practice. So focus on those type of questions as well. Okay. Right now, let me just take up a question. जैसे कोई भी एक क्वेश्चन है, जैसे मैं एक रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं और रैंडम क्वेश्चन के साथ we will see what we get and then we'll conclude. So let's take up a question. Let's say there is a polynomial 5x square minus या तो 5 नहीं करते हैं, क्वेश्चन फालतू में कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. Let's leave this. Let's say p of x is 2x square minus 4x plus 5. Now you need to find out what is alpha plus beta, find out what is alpha into beta, find out what is alpha minus beta, find out what is 1 upon alpha plus 1 upon beta. Please do these 4 things fast. You have 3 minutes. Okay, I've got some answers, so I'll start the solution. So first thing asked was alpha plus beta. Alpha plus beta is minus b by a. पहले हमेशा ये कर लेना कि a, b और c की वैल्यू लिख लेना. So your a is 2, b is minus 4, sign is important, and c is 5. So alpha plus beta minus a will be minus of minus 4 by 2, which is 4 by 2, which is 2. Alpha into beta is c by a, 5 by 2. because of which it will be 5 by 2. Cannot be simplified, that's the answer. अल्फा माइनस बीटा, जैसे आपको अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो हमें जो मेथड है वो यूज करना होगा, ये वाला जो आइडेंटिटी है वो यूज करनी होगी. सो आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो प्लीज कंप्लीट इट ऑफ. कंप्लीट. ओके, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा इज 5 by 2. So 2 square is 4. यहाँ से ये कट होके हो जाएगा 2. 2 5 is 10. So this becomes minus 6. So that is alpha minus beta का whole square. Now alpha minus beta का whole square अगर minus 6 आता है, so ये तो possible नहीं है ना? Yes sir. Difference जो भी है उसका square cannot be negative, right? Yeah. So such questions will not come in your exam. But what you will do is you will just write down that alpha minus, अगर ऐसा question आ जाता है, so you will just mention that alpha minus beta whole square is minus 6, or you can also mention that alpha minus beta will be root of minus 6. That's all you will mention. Next thing is 1 upon alpha plus 1 upon beta. इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए इंडिविजुअल वैल्यूज की जरूरत नहीं है. We take up LCM. I get beta plus alpha in numerator and alpha into beta in denominator. Right. So 2 I upon get 5 upon 2, that is 4 upon 2 5. upon, yeah. So this 2 goes up and you get 4 by 5. So these are the answers. Am I clear here? Yes sir. So please do one thing. Take up all the solved examples of your textbook, exercise of your textbook, whichever textbook you follow, reference book. Also, I'll be sending some questions right away based on polynomials. So do practice that too. Okay. I hope all good. So please do this much. Next time we discuss whatever doubts we have on quadratic, and then we take up linear equation in 2 variables. Sir, then doubts of polynomial when we will clear? Yeah, polynomials only. Sorry, doubts of polynomials, and then we take up linear equation in 2 variables. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Cool. See you guys. Bye bye. Take care. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, sir.